Good morning everyone. Yes, electrical study point रे आपको स्वागत है। आज हम पढ़िबा इलेक्ट्रिकल वायरिंग विषय। सो इलेक्ट्रिकल वायरिंग रा शॉर्ट नोट विषय हम जानिया। तापर पर मु अर्थिंग चैप्टर भी कंप्लीट कर देछि। और जो मैंने थ्री फेज सिस्टम भी जाने थ्री फेज सिस्टम भी कंप्लीट करछि। सो हम वीडियो टिके जाके चैनल को आसीकी हमर लाइक करबे, सब्सक्राइब, शेयर करबे, ता सहित मते अपलोड कर देखे वीडियो मते जान पाइबे। ओके, so चलते से विषय देखिबा हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग। सो मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट टॉपिक। सो एवरी एग्जाम रे किसी ना किसी यार वोल्टेज रहता है। सो 5 to 6 मार्क। सो जेकोन से एग्जाम रे देखिबा 5 to 6 मार्क रो वोल्टेज एई चैप्टर रो पाई परिबे। ओके, सो चलते स्टार्ट करबा आज रे टॉपिक्स। इंट्रोडक्शन कोन दैछे। सो वायरिंग होले हमें कोन बुझुछे। सो वायरिंग is the internal of wiring including of a light, fan, heater and 5 ampere per socket and 15 ampere per socket etc. So आमे जदि वायरिंग कहूचे कहा ऊपर बुझौछु ना वायरिंग कहले जेडे कि इंटरनल ऑफ वायरिंग होछु बुझौछु। ओके, इंटरनल ऑफ वायरिंग जहाँ कहा भीतर ना गोटे लाइट लोड हो कि फैन लोड हो कि हीटर लोड हो जोड़े कि 5 एम्पियर रो सॉकेट कि हमर 15 एम्पियर रो सॉकेट को कनेक्टेड है कि थिबा टुगेदर दैट इज कॉल्ड अ वायरिंग। और इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉइंट पर जे कोन से इंस्टॉलेशन जो पॉइंट थिबो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन से पोर्ट रे कनेक्ट हेते लगेगी तो स्विच ते हो सॉकेट हो। ओके, सेटा का हम कोन कहबा ना इंटरनल ऑफ वायरिंग। द इंटरनल ऑफ वायरिंग कंसिस्ट ऑफ कहा पर ना लाइट, फैन एंड पावर ऑफ द सर्किट्स। सो दीटा पर गोटे होची लाइट लोड कहूचे बा लाइट और फैन लोड कहूचे, अनदर इज आवर पावर लोड कहूचे बा पावर सर्किट। सो द वायरिंग ऑफ दिस ऑफ सर्किट should be in separate। किंतु हम वायरिंग कहले कोन होते वायरिंग ऑफ गोटे सर्किट रो गोटे सेपरेट पार्ट केवल एका दिटा विषय नहीं बा लाइट, फैन लोड बा पावर सर्किट लोड दिटा सेम नहीं। दैट इज द डिफरेंस। कौन डिफरेंस से जानिबा चलो। सो वायरिंग जानिया पूर्व हमें फर्स्ट ऑफ ऑल केतरा रूल्स जानिबा निहाती जरूर। सो रूल्स जो होची कहा होते आई रूल्स होची इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल होते हमर रूल्स तयारी हिची गोटे वायरिंग जेतरा हम करूचे कोन कोन रूल्स रहबा निहाती जरूरी। ओके, चलो देखिबा बे फर्स्ट रूल्स कोन देछि। रूल्स 1 देछि। आशा करूचे मो वॉइस टा समस्त सुबुथबो। कई जन यदि मते कंफर्म करि परिबे त भलो हबो। प्रतीक्षा वॉइस सुबुची कई जन चैट करिकि मते मैसेज जणाओ। ओके ओके, थैंक यू। चलो, सो जनरल रूल ऑफ वायरिंग कोन ना जे कोन से हम ओटा वायरिंग करू जे किछि ना किछि ओटा रूल रोची सदा मन रखितबा हम इलेक्ट्रिसिटी रो रूल अछि दैट इज कॉल्ड द आई रूल। आई रूल on जे हम रूल्स कोन जानिबा फॉर द हाइट ऑफ द एनर्जी मीटर। हमें जे गोटे एनर्जी मीटर व्यवहार करछ समस्त जानितबो। सो एनर्जी मीटर रा हाइट टा केते रहबा जरूरी बा हाइट केते फीट रहबा जरूरी जेटा कि 1.5 mm फ्रॉम द फ्लोर। जदि गोटे फ्लोर हमें व्यवहार करछे फ्लोर रो केते रहबा जरूरी 1.5 mm। So this one is very important exam point of view रो जो कौन पचारथबो एनर्जी मीटर रे जोटा कि हमें हाइट केते ऊपर को लगाया जरूरी ना 1.5 मीटर हमें लगेबा जरूरी। The main switches and distribution board should be installed just after the energy meter। सदा मन रखथबो मेन स्विचेस जो हमें मेन स्विच जो यूज करूचे से मेन स्विच टा कोन एमटी ओटा हैंडल लेगी थबो। सो ता भीतर कोन थबो ता भीतर दीटा हमर फ्यूज थिबो मन रखथबो केते दीटा हमर फ्यूज थिबो। सो जो मेन स्विच टा हमर रहिछि से मेन स्विच टा कोन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड शुड बी इंस्टॉल्ड जस्ट आफ्टर द एनर्जी मीटर। प्रथमे जेतले हमर सप्लाई आसीबो सप्लाई हम कोन वायरिंग आसे ना सिंगल फेज आसे। सिंगल फेज कोन आसथबो ना सिंगल फेज पैरेलल कनेक्शन थिबो। प्रथमे सप्लाई कोडी आसीबो ना हमर गोटे एनर्जी मीटर को आसीबो। समस्त जानिथबो एनर्जी मीटर कोन जेतले एनर्जी मीटर रे केतुरा टर्मिनल रहिछि ना चारिटा टर्मिनल मन रखिथबो। एनर्जी मीटर रो चारिटा टर्मिनल गोटे इन हेतिबो आ गोटे कोन हेतिबो आउट हेतिबो। सो भीतर एई दीटा सर्किट ता सदाळे बा न्यूट्रल जोडा हम कहउछे शॉर्ट हेतिबो। सो जदि हमें एटा फेज रहिला देन आरटा कोन जे न्यूट्रल रहितो। सो न्यूट्रल एठी हमर कनेक्टेड हे आसीबो देन फेज आल्सो एठी कनेक्टेड हे आसीबो। सो न्यूट्रल रो अनदर फेज जेतले जिवो एई फेज टा कंप्लीट हे कोडी जिवो ना एठी जिवो। सॉरी एठी मो एटा टिके लिबेरी भल से कर दोछि। ओके, सो गोटे फंडामेंटल एतिके जानिथो गोटे एनर्जी मीटर रे जो हम यूज करछे फर्स्ट हमर आसीबो एनर्जी मीटर।
मन रखिबो देन सेकंड रे कोन आसीबो हमर सेकंड रे एनर्जी मीटर सप्लाईटा सेकंड रे कोन आसीबो सेकंड रे हमर सप्लाईटा आसीबो जोटा कि मेन स्विच बोर्ड बा मेन स्विच बोले हमें कहू कौन कहू आपको मेन स्विच एमएस मेन स्विच देन तापर कोन আছে डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोर्ड बा डीबी बोर्ड बोले हमें कहू डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोले हमें कहू ओके मन रखिथो प्रोसीजर है फर्स्ट इन करियो का को ना हमर एनर्जी मीटर की पथे आसीबो तापर जाई कि मेन स्विच तापर जाई कि तमे सब स्विच लगे पारो एमसीयू देई पारो जा भी हो तापर डीबी स्विच को आसीबो ओके नेक्स्ट पॉइंट देखिबा नेक्स्ट पॉइंट कोन देछि next point है हमारा the main switch and distribution board should be equipped with fuse unity जो मेन स्विच जो हम यूज करछे इक्विप माने कोन ता से कनेक्टेड हे किथिबो जोटा कि मु कहिले गोटे मेन स्विच रे हमर कोन रहछि गोटे मेन स्विच रे हमर दीटा फ्यूज हे कि रहछि गोटे मेन स्विच भीतर कोन इक्विप हे किथिबो हमर फ्यूज दीटा इक्विप हे किथिबो बुझबो सो ए फ्यूज हमर रहइबा नियति जरूरी ओके so for the fourth point देखिबा सब distribution board should be used for distant room that means the sub distribution board माने कोन कहते ना प्रत्येक रूम रे गोटे गोटे हमर स्विच कनेक्टेड हेतिबो कोटा कि बल्ब पे हेतिबो गोटे सॉकेट भी गोटे हेतिबो ओके से जो सॉकेट हो जो जहां भी कनेक्टेड हेतिबो एंड प्रत्येक कोटे द डिस्टेंट ऑफ रूम रे पाखा पकी किछि नथिबे एंड द लाइट फैन सर्किट एंड पावर सर्किट शुड बी सेपरेट जतले लाइन सर्किट करूचे किबा लाइट फैन सर्किट करछे किबा पावर सर्किट करछे सेतळो का कोन सेपरेट करे सपोज एग्जांपल सपोज मोर ले एसी उठे लगेबी ओके एसी लगे गेले मते कोन करियो पावर सर्किट देबा पड़ियो जो पावर सर्किट देबी सेटा हमर मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रे जो हमर रहितबो जोथरे कि हमर देखिथिबो फैन पे लाइट पे आउ हमर सॉकेट दे दै थाए प्लग टॉप पे सेते कनेक्टेड हे कि नथियो पावर टा पे हमर सेपरेट हे कि थिबो ओके सदाळे मन रखिथिबो and light fan and 5 ampere socket for a circuit having a not more than up to 10 points so ei jo question na is very important exam रे बहुत थर क्वेश्चन आछे केते लोड हेतो दरकार ना 800 वाट रहतो जेटा कोन देछि एटा होछ हमर जेडे के लाइट और फैन लोड देछि लाइट एंड फैन लोड आउर दीटा पचारि गोटे होछ पावर लोड आउट लाइट एंड फैन लोड पावर लोड और लाइट एंड फैन लोड बे कोन यदि हमें लाइट एंड फैन लोड यूज करछे ताले 800 वाट रु अधिक हबो नहीं सेटा एग्जांपल ऑफ 10 पॉइंट 10 टा पॉइंट रहितबो केतरा पॉइंट रहितबो ना 10 टा पॉइंट रहितबो आ लाइट रे केता एम्पियर लागि परिबो ना 5 एम्पियर ही लागि परिबो ओके देन मिनिमम ए जिंस रे मो पावर रे पढेबी या पर पावर रूल अछि पावर रूल मते देखिबो नेक्स्ट कोन देछि द पावर सर्किट शुड बी the power circuit should have a more than up 2 points of a 15 ampere एटी के पढेले पावर टा केते थ दरकार एटा 15 एम्पियर थिबा 15 एम्पियर रो और मैक्सिमम वो केतरा यूज करबे दुईटा यूज करबा और लोड एक्सीडिंग इन जेंति 3000 लोड रो ऊपर हो नथिबो 3000 वाट सो इदिटा वेरी इंपोर्टेंट केतरा ना टू दुईटा पॉइंट थवा दौर रे 15 एम्पियर रे एथर केतरा थिला ना 10 टा पॉइंट 800 वाट रो आ 5 एम्पियर रो आ काहतर 5 एम्पियर रो सो आपके एटा केते वाट कहबे पावर टा 3000 ऑफ वाट केते वाट ना 3000 वाट the minimum size of a conducting of a wire for a internal of wiring जदि हमें गोटे इंटरनल ऑफ वायरिंग करूचे सो मिनिमम साइज कंडक्टर केते रहे करे ना 1 mm स्क्वायर फॉर कॉपर जदि कॉपर व्यवहार करछे तले 1 mm स्क्वायर कंडक्टर व्यवहार करबा किबा 1.5 mm स्क्वायर फॉर एल्युमिनियम ऑफ कंडक्टर सो केते 1.5 है एल्युमिनियम 1.5 है एल्युमिनियम 1 है हमर कॉपर while wiring the gap between of the wall plug or wall plug is keeping 30 to 45 तू हमर plug यूजेस करूचे बा wall plug जो यूजेस करछि किबा roll wall plug जो यूज करूचे तार डिस्टेंस के तरह धरि ना 30 ରୁ 45 सेंटीमीटर ऑफ डिस्टेंस गैप रहबा जरूरी ओके एंड द हॉरिजॉन्टल ऑफ वायरिंग इन द लाइट फैन जदे कोनोसी कारण रो हमें हॉरिजॉन्टल ऑफ लाइट वायरिंग करूचे जोडे कि एग्जांपल ऑफ लाइट हो किबा फैन हो सर्किट हो and should be kept at least 3.5 meter up above the floor through 3.5 meter रहे जेते जरूरी और 0.5 मीटर बिलो द सेलिंग रो जदी हम ऊपर पट्टा हमर सेलिंग गोटे छातर कोन तो ऊपर सेलिंग हेतिबो सो ऊपर जदी हम काउंटेबल करबा ताले गोटे लगेबा केते 0.5 मीटर इट जदी हम ट्यूब लाइट लगेबा केते आसीबा 0.5
5 मीटर जदि तळो काउंटेबल करबा केता आसीबो ना तळो काउंटेबल करले 3.5 मीटर मन रखिथिबो 3.5 मीटर एंड सेलिंग फैन जो हमें लिखिछि the selling of if the selling is more than 4 meter of height जदि सेलिंग ना तमरो 4 मीटर हाइट हेतिबो जदि सेलिंग ना 4 मीटर हाइट न हे जदि 3 मीटर हेतिबो तो एही अनुसार कलम द प्रॉब्लम सो सेलिंग रा हाइट कंडीशन दे हमें आपको यूजेस करी परिबा सो नेक्स्ट पॉइंट देखिबा द हॉरिजॉन्टल रन ऑफ वायरिंग फॉर द पावर ऑफ द सर्किट जदि पावर सर्किट हमें व्यवहार करछे को सर्किट देखछे ना पावर सर्किट and should be at a height केते रहबे निहाती जरूरी ना 2.5 मीटर जदि हमें पावर सर्किट व्यवहार करूछे हाइट केते रहबे जरूरी ना 2.5 मीटर रहबे निहाती जरूरी and the distance between the देखो ई जो क्वेश्चन रे ना इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट एवरी एग्जाम ना कोथरे क्वेश्चन पचारथिबो सो जो 15 20 टा 30 टा रूल्स अछि भलसे ताकू पढि दबो ओके द डिस्टेंस बिटवीन द बैटन वायरिंग क्लिप्स should be 10 से गोटे हमें जो बैटन वायरिंग रे जो क्लिप्स दोचे ओके जो क्लिप्स हमर दे दोचे एटा वायरिंग हला ना हमें वायरिंग रे हमें क्लिप्स लगे दोचे जो बैटन वायरिंग जो क्लिप्स दे दोचे से बेटे क्लिप्स टा गोटे क्लिप रो आउट क्लिप को केते सेंटीमीटर दरकार 10 सीएम हवा निहाती जरूरी 10 सेंटीमीटर हवा निहाती जरूरी इने को केसेस रे ना हॉरिजॉन्टल रन केस रे आ जतड़ 15 केसेस केतड़ हवा ना 15 केसेस टा हमर वर्टिकुलर हवा वर्टिकल एटा हला हमर हॉरिजॉन्टल ओके नेक्स्ट देखिए कोन ऑल मेटल पार्ट ऑफ ए अपेलेंस एंड वन पिन ऑफ द थ्री पिन सॉकेट मस्ट बी अर्थेड जदि जत्तक हमें मटेरियल देखुचे बा हमर मेटल पार्ट ऑफ देखुचे से मेटल पार्ट रो कोन थे जरूरी निहाती भाबे हमर पिन और सॉकेट अर्थेड हेतिबा निहाती जरूरी सो द नेक्स्ट पॉइंट देखिए कोन द हाइट ऑफ द लाइट पॉइंट फ्रॉम द फ्लोर इज केते रहे जरूरी जदि लाइट पॉइंट रखिबा हमर फ्लोर रो केते रहबा ना 2.5 सेंटीमीटर केते रहथो 2.5 सेंटीमीटर द हाइट ऑफ द फैन शुड बी केते रहबा द हाइट 2.75 from the floor 2.75 meters and then height of a 5 ampere socket should be board or switch board केते रहबा ना 1.25 meter 1.25 meter for the floor और जदि हमें द हाइट ऑफ 15 एम्पियर सॉकेट शुड बी यूज करूचे ताले केते यूज करबा ना 1.50 मीटर एंड 25 of 70 मीटर फ्रॉम द फ्लोर जदि फ्लोर हम यूज करूचे ताले हम केते रहबा जरूरी 1.50 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर जोटा कि 1.50 मीटर को हमें 25 सेंटीमीटर हम कहूचे सो 15 एम्पियर लगेया पई सो जदि हमें 14 स्टैंडर्ड वायर को जीआई वायर शुड बी यूज करूचे इन द एंटायर ऑफ वायरिंग फॉर अर्थिंग पई कोन यूज करछे ना 14 रो स्टैंडर्ड वायर गज रो जीआई जोटा कि लास्ट क्लास रे मो अर्थिंग विषय रे जड़ैथिले सो एज पर देन पॉसिबल स्विच बोर्ड शुड बी इंस्टॉल ऑन ए राइट साइड स्विच बोर्ड कते इंस्टॉल हो राइट साइड व्हाइल ऑफ एंट्री तमे एंट्री करियर राइट साइड रे तमरो स्विच बोर्ड ता रहबा निहाती जरूरी एंड द स्विच बोर्ड शुड बी इंस्टॉल 0.5 मीटर अवे फ्रॉम द डोर सो डोर थारो 0.5 मीटर अवे रे ताको इंस्टॉल करबा निहाती जरूरी ओके देन porcelain pipe must be used when a routing the pattern wiring through the wall जति कोन सोडे कांथरे हमें राउटिंग करते बा वायरिंग करूचे ताले एटे कोन दाउ ना पोर्सलिन पाइप हमकु निहाते रे दबा को पड़िबो एंड 22 नंबर देखिया कोन देछि द वॉल थिकनेस इज यूजुअली 25 सेंटीमीटर वॉल र थिकनेस केते रे जरूरी ना 25 सेंटीमीटर and the height of the socket in the bathroom should be 1.5 meter the height bathroom रे हमें जो यूज करछे केता हाइट रे जरूरी 1.3 मीटर अप फ्रॉम द फ्लोर रो 1.3 मीटर रहबा निहाती जरूरी सेम देखिया कोन सेपरेट स्विचेस एंड सॉकेट should be installed for the air condition and the wiring should be also separate जो हमें रखुचे सेपरेटली स्विच व्यवहार करूचे बा सॉकेट व्यवहार करूचे कोइ व्यवहार करे सेपरेटली तो एयर कंडीशन पाई ओके बा वायरिंग शुड बी आल्सो सेपरेट वायरिंग मत सेपरेट करिया को पड़िबो कहार ना हमर पावर सॉकेट रो ओके जो एसी यूज करछे एसी होचे हमर पावर सॉकेट सो पावर पहले डिफरेंस वायरिंग हम ध्यान जरूरी तनो देखिबा नेक्स्ट पॉइंट जनरल रूल्स ऑफ पावर है जहाँ भी हमें जानिले वायरिंग विषय रे एबे जनरल पावर वायरिंग विषय कौन रूल्स अछि के जानिबा इन पावर केबल इंस्टॉलेशन हेवी गॉस मेटल कंडक्ट पाइप जोड़े कि हेवी गॉस मेटल कंडक्ट पाइप हम व्यवहार करूचे व्हिच इज रिजिड और फ्लेक्सिबल
should be used in carry the conductor. जो पावर वायरिंग आम यूज करछे जो केबल यूज करबा तादरे आम कोन जे फ्लेक्सिबल हेता निहाती जरूरी कोन इन पावर केबल जो कोच इंस्टॉलेशन होची हेवी गज हेता जरूरी तते मेटल कंडक्टर हेता जरूरी ता सत फ्लेक्सिबल हेता निहाती जरूरी सो switches and distribution board or starters should be have a metal casing जे switches हो बा distribution board हो कि starter हो तार तो मेटल लाते मेटल केसिंग हेतु निहाती जरूरी केसिंग कोन हेतु जरूरी ना मेटल हेतु निहाती जरूरी नेक्स्ट पॉइंट देखिबा कोन देसी all switches distribution board or starters etc should be installed on a iron clad board जदि हमें कोनोसी switches लगाउचे कि distribution board लगाउचे कि starter लगाउचे ता हमें कोड फिल्म करे जरूरी जो कोड फिटिंग करे जरूरी is the iron clad मन रखियो कोन एटा iron clad okay so next देखबे कोन there should be no joint in the cable inside the conductor pipe जदि हमें conductor pipe यूज करछे कोनोसी joint हबा जरूरी नहे बा कोन joint जेति नथिबो at least two ground connection should be used for the motor जदि हमें मोटर यूज करछे तले दीटा अर्थिंग कनेक्शन करबा निहाती जरूरी टू ग्राउंड ऑफ connection and the motor switches and starter should be installed near to the motor so motor starter ho motor switches sta motor पाखरे ही रहबा निहाती जरूरी and the motor must be installed on the construction of a foundation जो motor टा हम इंस्टॉल करछे कंस्ट्रक्शन जहां भी फाउंडेशन अछि से अनुसार करबा रूल करबा निहाती जरूरी and the main switches of a distribution board or motor switches and starter are installed on the wall or on a stand stand रे रखि परबा किबा wall रे आमे ताको installation or fitting करि परबा if switches board distribution board etc are installed on a stand then there should be a of at least of 0.70 meters open space of behind the switchboard से कोन देछि से देछि switch board or distribution board etc install जहां भी हमें करू स्टैंडर्ड अनुसार there जदी हमर at least 0.7 meter open space रहया जरूरी behind the switches so ते हम switch board ओटे फिटिंग करबा switch board fitting रे ता पछ पट जो हमर गैप टे रहबो केते रहया जरूरी ना 0.70 meter away from the wall थारू okay the height of the main switches distribution of board motor switch and starter board kept in 1.5 meter on the floor रहबो एटा कोथरे होची एटा हमर पावर वायरिंग रे मन रखियो पावर वायरिंग the height of the floor from the constructor of a foundation keep from 20 cm to 50 cm जो 20 cm रो 50 cm अछि constructor कोन छै the height of the floor is and the horizontal run of wiring should be 2.5 meter जो horizontal run करते wiring होची केते ना 2.5 meter हेतो एटा को wiring कुले माने एटा हमर पावर ओके नेक्स्ट पॉइंट देखिए कोन if the wiring is laid through in underground and trans the depth of a trans is kept in 20 जदि हमें underground wiring करबा केते ट्रीच छै ट्रीच जो यूज करछे ट्रीच ता हमें कोन यूज करिया is the 20 centimeter 20 centimeter and the minimum size of a conductor in a power where installation should be 1.25 mm the power wiring हमें करछे 1.25 mm per meter 25 meter per copper and 2.5 mm per aluminum okay so पिला माने हमें वायरिंग रो रूल विषय जानिले सो वायरिंग रो रूल ला मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम रे सदा बेले क्वेश्चन पचरसी वर्तमान टाइम रे आगु मते क्वेश्चन भी पचरिबो सो वायरिंग जति के ले रूल्स पढेले रूल्स का हमें निहाती मन रखिबा जरूरी ओके सो नेक्स्ट देखिबा कोन इलेक्ट्रिकल ऑफ वायरिंग देखिबा इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोन ना डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रे मते वायरिंग हुए okay प्रथमे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड रे दिस इज ए कॉमन मेथड ए फ्यूज इंस्टॉलेशन ए होची गोटे कॉमन मेथड रो जेटा कि गोटे फ्यूज इंस्टॉलेशन होची इन ईच सर्किट सब सर्किट ऑफ द बिल्डिंग एंड द कलेक्ट द एट ए वन प्लेस गोटे जगह कलेक्ट कराय के रखा जाउ अछि जेटा कि हमें स्विच बोर्ड बा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वाला में कहउछे ओके नेक्स्ट कोन देखबा इन दिस सिस्टम मेन लाइन आर इंस्टॉल इन ए टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन जेतरा हमें मेन लाइन यूज करछे कोन करछे मोर देन ऑफ टू और मोर दुई कि माइक का दिको कोन यूज करछे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉक्स व्यवहार करछे एंड फॉर्म हियर इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ऑफ ब्रांचेस आपको बोला हमें डिफरेंट ब्रांचेस डिवाइड मत करा जाई अछि यूजुअली वन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स
is used for one or two room. गोटे रूम कि दुईटा रूम आम कौन करवा गोटे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स व्यवहार करवा निहाती जरूरी the initial of a cost this system is high it is a disadvantage कौन है ना distribution wiring को wiring एटा ना हमर distribution wiring रे initial cost वाला very high then tree system wiring कौन in this system various sub circuit are created from the main line just like a branches so just like ଯେମିତି କି ଆମେ ଗୋଟେ tree ର branches ରହୁଛି ଇଏ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର branches ରହିଥିବ just like a branches and sub branches okay of a tree in this system wiring is installation using the two method ये जो system हमें व्यवहार करूचे tree system एते जदि हम wiring करबा दीटा मेथड रे हमें wiring करि परिबा कोन कोन गुटे होची joint method another होची connector method joint method कोन in this method sub circuit are created making a joint and in the cable and sustain the point on the main line of the tap to our hood से कोन देछि ना joint method रे गोटे सब सर्किट नबो से सब सर्किट क्रिएट कराबो जोतरे जॉइंट रहिथिबो ओके एंड द केबल एट सुटेबल पॉइंट जो जगह रे काम केबल लगाया था से सुटेबल पॉइंट रे हम केबल लगाइबा ऑन द मेन लाइन रो एंड टैप इज वर्क ओवर द जॉइंट से जॉइंट ऊपर हम कोन करिया कनेक्टिविटी करके बस वर्किंग करके देखे सपोज एटा हमर ट्री सिस्टम है मो जदि एटा मोर कनेक्ट नबार थिला सो एटा मोर कनेक्टर नै जिबी कनेक्शन देन एटा कोन करियो एटा वर्क कर देबी जोटा कि कोन वर्क करैबी ना ओ जॉइंट ऊपर ही वर्क करैबी ओके टेप माध्यम रे कहा माध्यम रे ना टेप माध्यम रे सेटो आउ किसी समय वाला पर मते एटू मते नवा पड़िबो आउ एटू मते नै पड़िबो ई परि भाबे हमर ब्रांचेस है कि हमर कोन आज लुक लाइक आज ट्री पर क्या देखा जाय सेटा हम को ट्री वायरिंग करछु सो जॉइंट वायरिंग मेथड जानिले so connector method कोन in this method connector is installation so connector लागि थिबो टू पिन हो तुम जो connector लागि थिबो से connector कोन दियो connector connected हितो and making a cut in the main line and connected in the wire of the subcircuit main line में connected करके काट डिस्कनेक्ट करे कि हम कोन करे connected to the subcircuit and ये connector से हम attachment करेंगे ओके So next point is our type of wiring. So type of wiring कहले कोन बुझितो ना type of wiring हमरो दी प्रकार रो कोन रहछि गोटे होछि टेम्पररी वायरिंग आउट होछि हमर कोन परमानेंट वायरिंग टेम्पररी वायरिंग होछि आउटे परमानेंट वायरिंग कोन टेम्पररी वायरिंग होछि ना फ्लेक्सिबल जोडे कि हमरो टेम्पररी वायरिंग विषय जानिबा फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग होछि गोटे फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग क्लीट वायरिंग मुंदा होछि ओके आ कोन होछि ई दिटा होछि हमरो फ्लेक्सिबल सॉरी टेम्पररी वायरिंग फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग कोन जोडे कि फ्लेक्सिबल हमें पीवीसी हो कि सीटीएस हो केबल व्यवहार करते दिस वायरिंग आउ कोन होन्छ ना सिंगल स्विचेस इज यूज्ड फॉर different line पे different single switches हमें व्यवहार करते and it is a suitable for a safety purpose hence it is unsuitable not suitable this is a unsuitable for the safety purpose and hence it is used in rarely हमें rarely uses करते so cleat wiring kono the distance between about two cleat is kept approximately 30 cm to 60 cm जो cleat हमें लगे से cleat हमें distance केते रहे जरूरी ना 30 to 60 cm रहेगा निहाती जरूरी then VIR or PVC cable are carried through the cleat तो VIR हो कि PVC हो cable हमें व्यवहार करूचे तक हमें कोन carried in a through cleat on these upper roll plug or wall plug or wall plug मतलब नहीं करे को पड़े देखो ये जे गोटे क्लीट वायरिंग रो कोन है ये सबोडर चीपेस्ट आ सस्ता वायरिंग सबोडर चीप और सस्ता हला एला क्लीट वायरिंग जेडे कि ये गोटे क्लीट देछि एंड ये आल्सो भी क्लीट देछि सो एको भीतर केते डिस्टेंस रहबो ना 30 रु 60 भीतर डिस्टेंस रहबो ओके 30 टू कोन 30 टू 60 देछि केते रहबो डिस्टेंस बिटवीन 30 टू 60 cm ओके next देखा permanent wiring कोन ना permanent wiring है ना casing capping wiring there are two type of casing capping गोटे होची wooden casing capping और होची PVC casing capping so wooden casing capping कोन ना wooden casing capping है in this method cable is covered with a double tube जोटे कि cable cover हितबो कोन है cable cover हितबो ना double tube रे and capping method ये को teak wood जोटा capping करबा में तापर कोन रे तो teak wood रहितबो in which insulated cable are installed जा फल कि ई परे भाबे कैप ता कोन हितबो ना wood रहितबो आ जते कैसी कैप ता रोड तो कैसी ता कोन हितबो ना दीटा हम जोटे कि कवर कराई छी
मेटल ट्यूब भीतर गोटे ट्यूब भीतर पसिबो ओके नेक्स्ट देखिए कौन VIR और PVC केबल यूज आपको व्यवहार करे पे को कौन जिंस यूज करछे ना VIR हमें व्यवहार करछे किबा हम PVC केबल को व्यवहार कर परिबा वुडन कैसिंग इज इंस्टॉल ऑन द वॉल एट ए डिस्टेंस ऑफ केते ना 60 सेंटीमीटर यदि कांथर हम इंस्टॉल करछे त डिस्टेंस रहया जरूरी केते 60 सेंटीमीटर with the help of wall plug कहा पदरे ना wall plug रे help पदरे or the roll plug and after the lying air just in cable जहाँ पर कि lying after the lying the air just in cable in the casing or capping down on the top so casing capping जिनको होती है मतलब वो ओडेन ऑफ casing so presently PVC casing capping presently ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା PVC casing capping ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ PVC casing capping ଆମେ କରୁଛେ use in a place of wooden casing capping wooden casing capping ବଦଳରେ ଆମେ PVC casing capping को ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ओके सो नेक्स्ट पॉइंट को ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି नेक्स्ट पॉइंट PVC casing capping कौन इन दिस अप casing capping एई भावर casing capping को मेड अप PVC PVC तयार ହେଇଛି PVC फुल फॉर्म कौन ना polyvinyl chloride is used and it is does not require any link clip कौनसी न्यूट्रल लिंक दरकार नहीं लिंक क्लिप के दरकार नहीं and it require a highly skilled worker जने जदी highly skilled worker हेतु ताले आपको PVC casing capping करि परिबो and it is not it is working life a longer than after that wooden casing capping ये वर्किंग लाइफ रे कोन बहुत वर्ष काटर दान तुलना जदी करबा वुडन कैसिंग कैपिंग थारो ओके सो देखो ये होछ हमर केबल या भीतर इंसर्ट हेतिबो सो एक ऊपर डा को आजिबो कैपिंग तळ डा को आजिबो कैसिंग एमि तबरे विड्रॉल करा दे कि भीतर केबल आसे ओके नेक्स्ट पार्ट देखिए बैटन वायरिंग कौन the width of the batten or depend on the number of a conductor so the width of the batten is depend on the number of a conductor and batten width are available size in a kete kete size रे available होते हैं 13 size रो 19 25 31 38 44 50 56 63 69 and 75 mm रो size तो निहाती जरूरी the batten are fitted on the wall with the help of a ग्यूलाइस प्लग मन रखिथिबो बैटेंड माने ग्यूलाइस ऑफ प्लग यूज कर देता है जहां फल या हेल्प रे ना से किसी कर पारे नै ग्यूलाइस हेल्प प्लग एंड विथ द यूनिफॉर्म ऑफ डिस्टेंस केते ना 45 सेंटीमीटर ग्यूलाइस जो प्लग रहइबो जेटा कि यूनिफॉर्मली हमर डिस्टेंस केते रहे न जरूरी है ना 45 सेंटीमीटर रहइबा नै द पैटर्न इज मेड ऑफ टी कोड पैटर्न कोत रे जो ना टी कोड रे हिथिबो पैटर्न इज मेड फॉर इन टी कोड ओके जस्ट मिनिट एबे देखिबा हमें लीड सीथ वायरिंग जस्ट 2 मिनिट पिले माने ए पानी पी दे
हाँ देखिए नवा कंडक्ट वायरिंग also यूज करवा कंडक्ट वायरिंग is the most durable efficiency and the safe from the fire ସବୁଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ efficiency is the most durable efficiency and the safe from the fire ସବୁଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ efficiency conduct wiring is the most durable, efficient and safe from the fire. Generally, PVC conduct is used, but metal or flexible pipe is also used. ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଜେନେରାଲି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପିଭିସି କଣ୍ଡକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ମେଟାଲ ଆଉ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ପାଇପ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଯାହା ପରେ ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ଯାର ଯେତିକି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ମେଟାଲ ଆଉ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ପାଇପ ଯଦି ଆମେ ୟୁଜ କରିବା ଅଧିକ କଷ୍ଟଲି ପଡିଯିବ ଦେନ୍ କନସିଲ୍ଡ ୱାରିଂ କଣ ନା କନସିଲ୍ଡ ୱାରିଂ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ହିଡେन ୱାରିଂ ବୋଲି କହୁଛେ କଣ କହୁଛେ ନା ହିଡେନ ୱାରିଂ ବୋଲି କହୁଛେ ଯୋଉଟା କି ୱାଲ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଥାଏ କୋଉଥିରେ ନା ଡକ୍ଟ ୱାରିଂ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ ୱାଲ ଅର ଡକ୍ଟ ୱାରିଂ so concealed wiring remain hidden and it provide the protection of the wire आपको provide कौन करे ना wire रा protection provide करे a large number of wire can be installed अधिक परिमाणर wire हमें व्यवहार करते large number of wire can be installed in it and this wiring method is preferred for the workshop जदि हमें कौन से workshop करूचे से workshop रे हमें कौन व्यवहार करिबा concealed wiring व्यवहार करिबा सो चलो पिला माने देखिबा आउट जिंस जोडे कि कंडक्ट पाइप आमे जो कंडक्ट पाइप यूज करछे 1.5 स्क्वायर एल्युमिनियम कंडक्टर पाई तले हम साइज करदा अप टू 3 कंडक्टर जदि तीनटा कंडक्टर दबा तले 16 जदि 4 रे 5 दबा 19 6 रो 8 दबा तले 25 9 रो 12 दबा 32 एंड 13 रो 15 तले 38 इस जिनसटा मन रखियो खास करी कि मैक्सिमम ऑफ एई सिना 4 to 5 वायर क्वेश्चन ए दुटा ही आसे साइज हला 4 to 5 वायर 4 to 5 वायर माने एरा वायर सब नंबर ऑफ कंडक्टर ओके सो नेक्स्ट देखिबा कंडक्ट ऑफ एक्सेसरीज सो सबसे इंपोर्टेंट जिंस एवरी वायरिंग रो पार्ट रे हमें एक्सेसरीज जानिबा निहाती जरूरी कोन कोन कंडक्टर कपलर आकु कोन कहउची कंडक्ट कपलर जेडे कि कपलर किबा सॉकेट बोली कहउ कपलर किबा सॉकेट बोली कह जाय यूज्ड टू कनेक्ट द टू कंडक्ट पाइप दीटा कंडक्ट पाइप को कनेक्ट करे पे व्यवहार हमें करूचे एंड बेंड आकु कोन कहउची ना आकु बेंड बोली कहउची सो बेंड केते जरूरी ना बेंड आर यूज्ड where the pipe has been in a 90 degree जेतले 90 degree थिबो सेतले कमे यूजेस करछे बेंड so conduct pipe elbow माने कोन it is used in a place of a bend जेतले बेंड रहइबो सेतले कमे व्यवहार करियो सपोज ओडा वायरिंग एले करछोडे बेंड आसिला त कमे कोन करे बेंड यूज करबा बा कंडक्ट पाइप एल्बो बोले हमें कहछे दी प्रकार अछि गुटे अछि इनिस्पेशन एल्बो टाइप एल्बो आउट अछि सॉलिड एल्बो ओके but it angle is more rounded तार angle टा जो थिबो से angle टा गोटे more अधिक rounded है more rounded and it is easy to pull the wire and installation rounded काम पे करा छी ना wire टा easily to move करिया पई कंडक्टर टा move करिया पई installation समय रे of this wire also does not get any damage जा फल डैमेज भी हबार जेंति कोनसे असुविधा न थाए so next देखिया conduct bushing आको कोन कहते conduct bushing दे देता bushing are used rigid the conduct enter in a conduct box or switchboard conduct box और switchboard रे हमें bushing व्यवहार करूचे तो नेक्स्ट देखा conduct nipple आको कोन कहछि conduct nipple को आउछि जोटे कि conduct nipple is similar to a conduct bushing conduct nipple जहां देखिया को conduct bushing मद सेम देखिया को and with a different being that different कोन inside the surface of a conduct nipple is smooth इनसाइड जो कंडक्ट निपिल हम यूज करबा तार भीतर पोर्शनटा कोन हेतु स्मूथ हेतु ओके एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिबा लॉक नॉट कोन नाउ व्हेन द रिजिड कंडक्टर इज इंस्टॉल्ड इन ए स्विच बोर्ड तो स्विच बोर्ड लगेबा दैट मोमेंट इट इज टाइटन तो टाइटन रखिया पे हम एटा लॉक नॉट व्यवहार करूचे ओके नेक्स्ट कोन हैला कंडक्ट सैडल हमें व्यवहार करछे सैडल यूज को व्यवहार करछे फिक्स द कंडक्टर हमने वाल तो कंडक्ट पाइप को हम फिक्स करे पे वाल रा में काको कंडक्ट सैडल यूज करू इंस्पेक्शन बेंड एंड एल्बो ए देखो इंस्पेक्शन बेंड एंड एल्बो कोन आर इंस्टॉल इन इंस्पेक्ट ऑफ द वायरिंग रे इंस्पेक्शन बेंड एंड एल्बो को व्यवहार करा जाउछि
सो नेक्स्ट देखिबा इनिशिएशन ऑफ जंक्शन बॉक्स को हम व्यवहार करूची जंक्शन बॉक्स केम थाए ना 2A जंक्शन बॉक्स अछि T जंक्शन बॉक्स अछि 4A जंक्शन बॉक्स अछि एंड 90 डिग्री ऑफ टू वे ऑफ इनिशिएशन जंक्शन बॉक्स मद अवेलेबल अछि ओके या 2A इनिशिएशन बॉक्स इज यूज सप्लाई फॉरवर्ड पॉइंट इन 90 डिग्री ऑफ टर्न केते डिग्री हितो 90 डिग्री हितो नेक्स्ट पॉइंट देखिए कंडक्ट रिड्यूसर कोन ना रिड्यूस आर यूज्ड टू कनेक्ट टू पाइप ऑफ ए डिफरेंट साइज टू पाइप ऑफ ए डिफरेंट साइज रे हमें कंडक्ट रिड्यूसर को व्यवहार करते सो एबे देखिया मोस्ट इंपोर्टेंट जिंस कैलकुलेशन ऑफ लोड जदि इलेक्ट्रिकल बल्ब यूज करते केते वाट हेते दरकार ना 60 ट्यूबलाइट हेतिले 40 फैन हेतिले 60 5 एम्पियर हेतिले 100 एंड 15 एम्पियर हेतिले 1000 ऑफ वाट बोले हमें कंसीडर करेबा ओके एबे जानिबा साइज ऑफ कंडक्टर जो साइज ऑफ एटा पिले माने मन होता साइज ऑफ कंडक्टर ओके साइज ऑफ कंडक्टर कोन ना साइज ऑफ कंडक्टर है नंबर ऑफ वायर और डायमीटर जोटा कि 1 हाफ कोर बोले हम कहउछे क्रॉस सेक्शनल एरिया केते रहते जरूरी ना 0.8 सो 2 कोर केबल पे केते ना 5 रहे जरूरी 3 और 4 कोर पे मतलब 5 है एंड एटा 5 माने कोन है ना एटा एम्पियर ये होचे एम्पियर ओके सो अप्रोक्सीमेटली वोल्टेज ड्रॉप केते वोल्टेज वोल्ट एम्पियर पर मीटर केते से 50 पर मीटर रे से 55 ऑफ वोल्टेज ड्रॉप होतो ओके हां नेक्स्ट देखबा हम केते ना 3.073 रे से मतलब 10 एम्पियर रो ये 0.931 पे ये मतलब 15 13 रो ये मत 0.735 2.1 देखो कहते क्रॉस सेक्शनल एरिया जति हमर बढ़ जो 2.90 बढ़ जाउची ये मतलब कोर कैपेसिटी के 20 एम्पियर एंड 15 एम्पियर 2 कोर ले 20 एम्पियर एंड 3 और 4 कोर ले 15 एम्पियर हमें यूज करते but current flow करते okay so that current capacity and voltage drop according to the size of a aluminum conductor so size of a aluminum conductor kon hoichi na according to size of a aluminum conductor the current drop होची voltage drop होची voltage drop होची ओके कोटे वोल्टेज ड्रॉप होची ना ये हमर 22 25.5 जेतले 1.14 केबल यूजेस करथिले 2 कोर रे आ 9 3 and 4 रेला 9 कोर ओके सो एटा जो हमर एम्पियर 10 एम्पियर ड्रॉ करबे ये हमर 9 एम्पियर ड्रॉ करबे सेही पले भाबरे 1.80 मध्ये रहिछि एंड 1.2 1.2.24 मध्ये रहिछि 1 अब 2.80 सर ई जो जिंसडा हमें कहउछे दैट इज ई जिंसडा कोन 2.801 2.241 1.801 so 1.401 3.4501 so ए 3.5 को 2.80 ई जिंसडा हमें कोन कहउछे दैट इज अ डायमीटर कोन कहउछे डायमीटर बोले हमें कहउछे ओके सो चलन देखबा नेक्स्ट कोन इन दिस ऑफ लाइट एंड फैन सर्किट जते हमें लाइट ऑफ फैन सर्किट यूज करूचे the voltage drop from the supply point to any point of the circuit should be 2% plus 1 मन रखिबो 2% of plus 1 केतला हो ना एटा हमरा वोल्टेज अप ड्रॉप हो कोन हो ना वोल्टेज ड्रॉप हो okay and for the rated of a supply and voltage and for the power load the power load rasibo should be kete not more than in 5% power load le not more than in 5% of the rated supply voltage okay चलन देबे देखिबा हमें वायरिंग से जानिले वायरिंग कर साला पर हमें ओटे टेस्टिंग करे देते हैं कौन टेस्टिंग करे देते हैं से जानियो ना गुटो जी कंटिन्यूटी टेस्ट है अनदर इज आवर पोलैरिटी ऑफ टेस्ट गुटो जी कंटिन्यूटी टेस्ट है आउट कोन छि पोलैरिटी टेस्ट कंटिन्यूटी टेस्ट कोन ना दिस टेस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज ओपन सर्किट टेस्ट कंटिन्यूटी टेस्ट को हमें अदर वर्ड रे ओपन सर्किट टेस्ट बोली कहथाउ okay and this open circuit the wiring is detected which is done by megawatt the open circuit हम कोन wiring is detected करियो हो जा पर रे केमिति डिटेक्ट करियो हो by using in मेगावाट माध्यम रे डिटेक्ट करियो हो कंटिन्यूटी टेस्ट से पोलैरिटी टेस्ट कोन
and through this upper test is check whether the phase cable is controlled by the switch or not. ଆମେ phase cable ଟାକୁ control by the switch or not. Okay, switch ରେ ସିଏ ଚାଲିଛି କି ରନ୍ କରୁଛି କି ରନ୍ କରୁଛି through this upper test ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛେ କେମିତି whether the phase cable is controlled, phase cable ଟା control କରିହବ କେମିତି by the switch. Okay, and for the testing of a purpose test lamp or neon tester is used. Test lamp and neon tester use करते कोथरे polarity रे मन रखियो polarity ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ. So निश्चित भाव में मन रहे जरूरी as per BIS rule on 1982 मसीह this test done for the entire of wiring of a use of a substation. So this test is done by megar माध्यम रे आपको हमारा टेस्ट कर देता है insulation test between a conductor. So under the I rule in 48, the value of a leakage current in a wiring should be not exceed by 1 by 5,000 of a full load of current. And insulation resistance केते रहे जरूरी 50 by number of consumption in the circuit. 50 by number of consumption in the circuit megawatt. So insulation test between conductor कौन रहेगा? Now under this test, insulation of a resistance between phase and neutral cable is measured. Under this test ଆମେ कौन use करिबा? ना phase and neutral cable measure करा जिवो, and the value of insulation of a resistance should not be exceed in a 1 million ohm. Oh, sorry, 1 mega ohm, not million, भूल कर दिली. एटा है 1 mega ohm. Okay, कौन इथे जरूरी ना 1 mega ohm इथे जरूरी. Sorry कि भूल फैक्टर का आदेश मिलियन. It is 1 mega ohm. So this test is done by in a megar, and for this test a megar provide in a 500 voltage. So megar output voltage टा केते थिबो ना 5 volt. Okay, should be used. Next point देखियो the specification area of a land for installation of a substation. So गुटे substation आमे installation करे पे हम कोन करूचे ना 33 के substation पे 5 एकर दरकार, 132 पे हमर 10 एकर दरकार, 220 के भी पे हमरा 25 एकर दरकार, and 400 के पे हमरा 50 एकर बा निहाती जरूरी लैंड रेकॉर्ड. क्वेश्चन आसीबोने फिर भी जानिथा जरूरी. एनर्जी मीटर रो केतरा टर्मिनल थाय मुटी क्या कहतली 4टा टर्मिनल फॉर ए कनेक्शन. Very important point. Remember that in the domestic wiring system, the fuse installed by the supplier after the energy meter. After energy meter, पर हमें fuse लगे पारिबो. And a staircase of a point is operated from a two location using a two-way switch. जो हमें staircase wiring use करछे, दीटा जागर ऑपरेशन कर परिबा बा दीटा जागर ऑपरेट कर परिबा. That is कौन by using in a two-way switch method. The loop in a system of wiring is commonly used in a domestic wiring. तो domestic wiring का हमें व्यवहार करूचे. Neutral air is a black color as per any of a code. Any code on the neutral air टा सदारे कौन रहे देखकर black color रहे निहाती जरूरी. And electric shock on a human body depend upon the current voltage and the contact time. So electric shock जदि हम कहबा केते मिनिट लागला दैट डिपेंड करछि कहा पर ना डिपेंड करछि हमर करंट ऊपर वोल्टेज ऊपर और कांटेक्ट द टाइम. Blue colored MCB knob is selected for the motor circuit. So हमें जतले blue color रो हमें MC व्यवहार करछे knob व्यवहार करछे कोथरे ना जतले motor circuit को हमें ऑपरेट करछे. If the working voltage is less than of 1000 volt, the working voltage is less than of 1000 volt रहे, then the voltage test should be carried out 2000 volt. दा फल रे voltage test carried केते करो ना 2000 of volt carried करबा as per in I rule only. So the minimum distance of an underground of a cable from the foundation of the building should be 100 cm. So foundation of the building थारु underground cable रा केते रहता डिस्टेंस जरूरी ना 100 सेंटीमीटर रहता जरूरी. सो थैंक यू वेरी मच हमर वीडियो टिके वाच करथिबारु आपन को नेक्स्ट टाइम रे मो आहुर एक भलो टॉपिक से तो मत आसीबी. आज पे टॉपिक टा कंप्लीट हे गला. सो मु चाहबे शॉर्ट नोट रहउची ताकू प्रिंट पीडीएफ कॉपी रे प्रिंट करिकि ताकू रिवीजन कर आ देख तमरो केते इंप्रूवमेंट होउची. या पर मोर फर्स्ट ईयर रो कोर्स कंप्लीट हे गला पर मु तमन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आनी बहुत शीघ्र ऑब्जेक्टिव होउची. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऊपर डिस्कशन करबा देखिबा तो रिमेंबर को जिंसटा प्रीवियस क्वेश्चन पढुची से. सो थैंक यू वेरी मच.